Hi, good morning everyone. See, this is the human body. Okay. See here, it is the eyes, it is the ear, and it is mouth, and it is nose. These legs. Okay. See the how is the body is rotating. I hope everyone see this. It's very nice now. I hope everyone understood this concept. Okay, bye bye. Hello, good morning everyone, children. Just today I want to see the sense organ. So this is senses of seeing. So which organ is using here? Eyes. Okay. Yes, the next is our nose. Okay. Yes, good morning children. How are you all? So today class we're going to read about our human body. You can see here our human body. I just show you so many blood vessels are going throughout our bodies. Some vessels carry pure blood and some are impure blood. You can easily find out. Okay. We have so many arteries, veins, capillaries. You just check. You can see in this 3D picture. The main organ is our heart, who pumps blood across our body, who purify the bloods and provide pure blood to body. Impure blood. Yes. ಗಿಡ ಮರ ಬೊಡ್ಡೆ ಕರಿದು ಎಲೆ ಹಸಿರು. ಬೊಡ್ಡೆ ಅಂದರೆ ಇದು. ಬೊಡ್ಡೆ ಹೇಗಿದೆ? ಇದು ಕರಿದಾಗಿ ಇದೆ, ಎಲೆ ಹಸಿರಾಗಿ ಇದೆ, ಹೂ ನಾನಾ ಥರವಾಗಿದೆ. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕವಿ ಕವನವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಗಿಡ ಮರ. ಹೌದಾ? ಇದನ್ನು ಬರೆದವರು ಸತ್ಯಾನಂದ ಪಾತ್ರೋಟ. ಬೊಡ್ಡೆ ಕರಿದು ಎಲೆ ಹಸಿರು, ಹೂವು ನಾನಾ ಥರ ಎಂಥ ಸೊಗಸು, ಏನು ಕಂಪು, ಬೆಳೆದು ನಿಂತ ಗಿಡ ಮರ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ಗಿಡ ಮರ. ಇದನ್ನು ಬೊಡ್ಡೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಹಸಿರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಥರ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹೂಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? Hello everybody, I am going to show you a miniature of solar system. This is how our solar system looks like. The sun is in the center and the 8 planets are moving round the sun. The earth is the third inner planet. Yeah, this is the earth. Yeah, it is also called blue planet. There is actually no orbit seen. Orbits are the imaginary line around which the planet revolves, on which the planet revolves. We can also see the comparative size of the sun and the planet. When the sun is so big, you see the planets are so small. Hope you liked it. Thank you.
Hello students, we all know that there are three main seasons. The first is summer season, rainy season and winter season. Children, by looking at this picture, can you tell me which season it is? Yes, it is summer season. During this summer, we feel very hot, right? So, people wear cotton clothes during summer season, and you all will enjoy and spend quality time with your family members during summer vacation, especially in summer season. Hope you all will love summer season very much, isn't it? Thank you, children. Good morning. I am Archana Singh from DPS Gurgaon. Today I will be talking about the topic production of positive rays or anode rays, which are also known as canal rays. Now here you can see the discharge tube, which is attached to a high voltage battery, and it is the gas is at a very low pressure. You can see the anode here and a perforated cathode. So we see, first of all, the gases get ionized and the electrons are knocked off. They go towards the anode, and the nucleus left is passing through this perforated cathode and go towards the cathode to the other end. So hence they are also known as canal rays because they are passing through the holes. As we know, protons are present inside the nucleus, so the protons cannot be knocked off. So hence the nucleus passes through these holes in the cathode, and hence the name canal rays. Thank you. Good morning children. Today we are going to study about the earth. I think this picture is visible to you all people. The blue color which is visible to you all people, that is only called as the earth. It is the third planet. So where we all people are living, where on the earth, on this blue color earth children, where the living things and the non-living things are surviving. So the living things are human beings, plants, animals. And when I'm talking about the non-living things, non-living things, river, soil, mountain, valleys. These are coming under the non-living things. Both living and non-living things are existing on this third planet, which is called as the earth, which is in the color of the blue. So earth is made up of 4 distinct different layers. The first one, which is visible to you, the first layer, it is in the green color. The green color children, so it is called as the first layer of the earth, and it is called as the inner core. The second layer of the earth is white color, which is called as the outer core, The first layer is called as the inner core, and the third one, this is the third layer of the earth, which is in the color of the brown color. It is called as the mantle. It is called, the third layer of the earth is called as the mantle. Coming to the last layer of the earth, the fourth distinct layer of the earth is crust. It is only called as the crust, which is in the color of the brown. These are the 4 different layers of the earth. So which you have seen, which is visible to you all people. ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್. ಹಬ್ಬಗಳಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ? ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೂ ಹಬ್ಬಗಳಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ದಿನಗಳು. ಏತಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಡುವಂತಹ ಸಂತದ ಕ್ಷಣಗಳಾಗಿ ದೊಡ್ಡವರು ಸಹ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡುವಂಥದ್ದು, ಆಡುವಂತಹ ಕಲೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸಂತಸಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಹಬ್ಬಗಳು ಏತಕ್ಕಪ್ಪ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ? ನಾವು ನೋಡಿ, ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ. ಈ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಏತಕ್ಕೆ ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು? ಮಕ್ಕಳಿಗಂತೂ ಈ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತಸ ನೀಡುವಂತಹ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅವರು ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸ್ತಾರೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ನೋಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಧರಿಸುವಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು
ಸಿಡಿಪಡಿಸುವುದು ಅಂದರೆ ಈ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುವುದು ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತಸದ ಕ್ಷಣ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೂ ನಿಮಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ದೀಪ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಕತ್ತಲನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಸುಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಬೆಳಕನ್ನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ಈ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಉದ್ದೇಶ. ಆದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಡೆದೋಡಿಸಿ ಸುಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಬೆಳಕನ್ನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೆಳಗಿಸುವಂತಹ ಹಬ್ಬವೇ ಈ ದೀಪಾವಳಿ. नमस्ते बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके सामने कुछ जंगली जानवर लेके आए हैं। आप आइए उन जंगली जानवरों को पहचानिए और उनके बारे में हमें बताइए। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले आपके सामने एक जंगली जानवर है। इसको पहचान कर बताइए कि ये कौन सा है। जी हाँ, हाथी। अच्छा, हाथी आपको देखो बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। अभी देखिए, हम इसको आपके सामने ये देखिए। अब इसको ध्यान से देख के बच्चों मुझे ये बताइए कि इस हाथी में आपको क्या खास नजर आ रहा है, क्या विशेष नजर आ रहा है, इसकी क्या खासियत नजर आ रही है। तो आप शुरू करिए। हाँ जी, ये विशाल है, बहुत अच्छे, विशाल हाथी, ठीक है। और ओके, ध्यान से देख के बताइए इसकी सूंड कैसी है। जी, लंबी सूंड। हो गई लंबी सूंड जी, लंबी सूंड। चलिए, और लंबे और तीखे दांत। जी, बड़े दांत भी कर सकते हैं, बड़े, लंबे भी बोल सकते हैं, लंबे दांत। छोटी आंखें। हाँ, इसके शरीर को देखते हुए आंखें छोटी ही है, तो हम ये भी लिखेंगे छोटी। ओके, यहाँ लिखते हैं छोटी आंखें। आंखें कैसी है? छोटी। चलिए हाथी जी, यहाँ आइए, यहाँ आ जाइए और जरा ध्यान से देखिए, लंबे बड़े कान। जी, बड़े कान। बड़े कान। और बताइए, 4 पैर। जी हाँ बच्चों, 4 पैर। ये अपने इस हाथी की विशेषताएं हैं, है ना। भारी भरकम शरीर एक और विशेषता है। हाथी विशालकाय होने के साथ साथ भारी भरकम, उसको भारी भरकम शरीर हम इसकी विशेषता में लिख सकते हैं, भारी भरकम। चलिए, ये सभी इसकी विशेषताएं हैं और इस प्राणी को हाथी बोलते हैं। हाथी, गज, गजराज, हस्ती इत्यादि नामों से भी हम हाथी को जानते हैं। तो हमने इसकी इतनी खासियत, इतनी विशेषताएं देखी। तो बच्चों, संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। बहुत अच्छी। तो हमने देखते ही हाथी की इतनी सारी विशेषताएं पहचान ली। और जब हम इन विशेषताओं से शुरू करते हैं, लंबे तीखे दांत, भारी भरकम शरीर, लंबे कान, छोटी आंख, पूंछ, और एक चीज हम भूल रहे हैं, लंबी सूंड। हाथी की विशेषताओं में सबसे बड़ी विशेषता है लंबी सूंड, जो हाथी को अन्य जानवरों से अलग करता और विशेष बताता है। तो बच्चों, यही विशेषताएं ही विशेषण
कहलाती हैं। जब हम किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषताएं जानते हैं या विशेषताओं के बारे में हमें पता चलता है जिन शब्दों से, उन शब्दों को हम विशेषण कहते हैं।